member of Sports Skill Council India, and member of CBSE and NCRT Curriculum Committee. He was the additional DG Technology for Commonwealth Games Delhi 2010 and worked for Atlanta Olympics and ESPN Star Sports. He is graduate and postgraduate from BITS Pilani. On the behalf of Human Resource Development Center, on the behalf of all the participants, and on my personal behalf, I welcome Sujit Panigrahi in this online refresher course for college and university teachers. Now over to you, sir. Please go ahead. Thank you so much, Yogesh. I think it's so kind of you. I think our relationship goes long back. I think all of us have, both of us have been part of different committees, have worked together, and over a period of time, we have been exchanging a lot of ideas. So, just to take from where you actually ended, it's basically so. So to all the participants, I just want to tell you that my background was not physical education to start with, in terms of degree. But for the last 25, 26 years, I've been working in the area of sports. So that's what I'm going to talk to you about. Uh, uh, I just want to apologize because right now I left my charger at home. So I'm actually, I'm doing it from a mobile phone. So but I'll try to make it up by doing it as seamlessly as possible. Uh, so, uh, so my background has been on the technology side. I started out from technology, but right now I work on the at a grassroots level. So let me just share a small presentation with you. Then I'll take all the questions that you have. I'm just switching off my mobile. The video. 1 second. Can you see the presentation? Yes, sir. Okay, thank you. So today we're going to talk about some exciting careers in sports. So let's look at my journey. I just wanted to share my journey because there's a lot of notion that you need to be from a sports background to be in sports. So this is my background. I actually did my class 10 from CBSE school, then class 12 from a state board school, and then I did my graduation and post graduation from BITS Planning. And from 2000, from 1996 to 2008, I worked on various projects. The election graphics for NDTV, then I worked on quizzing software for Basu. I worked in sports broadcasting for a really long time on ESPN Star Sports and sports technology. So basically timing, scoring and result system. Basically जो आप देखते हैं किसी भी sports arena में, so you have a timer, you have the scoring system, you have the result system. I work on that. Something called a game management system. Games के time पे you have logics, you have sign days, the scoreboards, the so all. So I primarily worked on the technology side for a fairly long time. This is to about 2010. So in 2010, we started Fitness 365, which actually does three things. One is building active schools. So we basically run physical education sports program in schools. The schools का PE period वो outsource करते हैं, so we run that thing. So so essentially the idea क्या है कि that you have curriculum for other subjects, mathematics, science, English, social science, हिंदी, हर चीज का curriculum होता है. तो आइडिया है कि हम स्पोर्ट्स का और फिजिकल एजुकेशन का एक करिकुलम हो सकता है या नहीं. तो हमने एक करिकुलम बनाया नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का. एंड उस करिकुलम में किसी भी सब्जेक्ट में क्या होता है, यू हैव ट्रेन टीचर्स, इक्विपमेंट, यू हैव लैबोरेटरी, यू हैव करिकुलम, and then you have examination. In the same way, we actually created a curriculum which has a fitness assessment report card given at the end of term 1 and term 2, along with the academic report card. Secondly, here that you have equipment which is age appropriate. बचपन से लेके 12 तक का class pre-nursery to it is age appropriate. You have trained in this. Have a platform which you
like what the child is doing on a daily basis. So what is that? हमने क्या education you have teachers and sports coaches. If they are working 1,000 schools also, they should be able to do a standardized curriculum delivery. They have own curriculum, they have access to curriculum, they have access to fun games, education games, ये सारी चीजें. So what we did was we actually used the knowledge of physical education and we use a knowledge of to build solution together. So where you have on-ground PE teachers delivering the activity or the curriculum, and then you have a platform to track what they are doing. So that's what we did. We also did training and skill development of 40,000 PE teachers and sports के साथ. फिर हमने 2.1 लाख टीचर्स को खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम का जो टीचर्स थे उन सबको हमने ट्रेन किया कि फिटनेस असेसमेंट कैसे करना है. तो उसके लिए भी हमने एक ऐप बनाया फिटनेस असेसमेंट. इसको केंद्रीय विद्यालय किए 2500 के लिए. इसमें 30 हमने विद्यालय का काम किया इंटीग्रेटेड करिकुलम बना कि बाकी से पढ़ा सकते हैं. अगर इंटरेस्ट. Sir, voice is not clear. It's not clear. Yes, sir. अच्छा मैंने वीडियो तो ऑफ कर दिया हूँ. एक्चुअली आई एम एट द दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा खराब है इसलिए मैं गाड़ी में बैठ के कर रहा हूँ. Okay, sir. Okay. So I can't because I was inside and the internet was very bad, so that's why I'm actually. So ठीक है. ISBT के पास हूँ तो it's actually yeah. Right, sir. Go ahead. Okay. तो यहाँ पे हमारे लिए इंस्पिरेशन क्या था एज अ दिस थिंग. सो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें करियर और उसके लिए जाता हूँ. तो हमने दो चीज को स्टडी किया. हमने स्टडी किया कि जो चाइना ने क्या किया था बीजिंग ओलंपिक्स का 12 साल पहले. बीजिंग ओलंपिक्स जब भी हुआ उस बीजिंग ओलंपिक्स का 10 इयर्स का पहले उन्होंने क्या किया 25 लाख बच्चों को पिक किया. उन्होंने उन बच्चों का 3 से 6 साल के बच्चे थे. उनका फिटनेस और स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने 12 साल इन्वेस्ट किया बच्चों को ग्रो करने के लिए. तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि 25 लाख बच्चों के ऊपर इन ए ग्रेजुअल फैशन फाउंडेशन लेवल से लेके एलिट लेवल तक का ट्रेनिंग धीरे धीरे करके किया. उसमें दो चीजें फायदा हुआ है. एक फायदा हुआ कि हर बच्चे का फिटनेस लेवल इंप्रूव हो गया. दूसरा फायदा यह हुआ कि जो उनको एक्सीलेंस चाहिए था चाइना के लिए वो एक्सीलेंस उनको मिल गया. सो क्वांटिटी विल लीड टू क्वालिटी. बेसिकली मीन्स कि अगर हर बच्चा रोज 60 मिनट्स खेले तो नंबर ऑफ चैंपियंस जो हमें प्रोड्यूस करना है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. जैसे बाकी सब्जेक्ट में हम इंजीनियर्स और मेडिकल डॉक्टर्स अच्छे बन जाते हैं. इसीलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि हर बच्चा उनको कर रहा है. क्लास प्री नर्सरी से लेके क्लास 10th 12th तक कर रहा है. तो अगर हम फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स को उसी तरीके से करें तो ऑटोमेटिकली हो. उससे फायदा क्या हो रहा है. अब ये चीज जैसे अभी इंडिया में होने लगा है तो अभी हमारे पास जो है वी हैव ऑलमोस्ट 34 लाख जॉब रिक्वायरमेंट्स. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. सो ब्रॉडली एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने 2010 में स्टार्ट किया और 2020 में वी बिकम इंडियाज लार्जेस्ट फिटनेस असेसमेंट कंपनी. हमने 77 लाख फिटनेस असेसमेंट किया है ऑल ओवर इंडिया में थ्रू डिफरेंट ईयर. उसका सिंगल प्रीमाइस है कि अगर हम इंक्रीज पार्टिसिपेशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी में ऑटोमेटिकली जो हमारा पोडियम फिनिश है विल गो अप एट द टॉप. सो दैट्स द एम ऑफ द कंपनी एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड कि हम 50 लाख से ज्यादा बच्चों का असेसमेंट हुआ. 35,000 से ज्यादा लोग ट्रेन हुए थे. 6.5 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था अंडर खेलो इंडिया फिट इंडिया. ये दोनों प्रोग्राम्स हमने किए. सिमिलरली हमने केवी और नवोदय का मैंने आपको बताया. अब हम उसके लिए जाते हैं जब ये सारी चीजें के किस किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. एज एन ऑर्गेनाइजेशन में बताऊं हमारे पास हमने क्या क्या लोगों को एम्प्लॉय किया. हमने उन लोगों को एम्प्लॉय किया जो मास्टर ट्रेनर्स थे जो ट्रेनिंग दे सकते हैं. हमने टेक्नोलॉजी लोगों को ट्रेन किया. हमने उन लोगों को ट्रेन किया जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनसे सबसे इक्विपमेंट भी लिए. तो एज ए इकोसिस्टम जस्ट थ्रू वन ऑर्गेनाइजेशन काफी लोग उसमें इम्पैक्टेड हुए. सिमिलरली हम देखते हैं कि बाकी हम स्पोर्ट्स सेक्टर को जब हम समझते हैं तो ये क्या है. जैसे एज एन एग्जांपल हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ये क्या है. ये नेहरू स्टेडियम का एक फोटो है. क्या वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है? यस इट इज रिलेटेड. सो बेसिकली मीन्स कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो
या स्पोर्ट्स के ग्राउंड को हम जैसे बनाते हैं, सो पीपल हु आर इन्वॉल्व इन building of the pitches, the building of the entire stadium, building of the field of play, or conduct of the event. Everyone is part of the sports industry. Secondly, हम देख रहे हैं प्रीति जिंटा में क्या कॉमन है, और और हर्षा भोगले में प्रीति जिंटा एज एन एक्ट्रेस हम जानते हैं, but she is also owner of one of the teams, right? So there are people who are from other background, celebrities हो गए, film stars हो गए, successful businessmen हो गए, या इवन हर्षा भोगले कौन? हर्षा भोगले वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIM अहमदाबाद, सो MBA है, बट नाउ ही इज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. सो सिमिलरली स्टार स्पोर्ट्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम ले लेते हैं. सो इट्स अ टीवी चैनल आफ्टर ऑल, जो एंटरटेनमेंट भी प्रोड्यूस करता है, उसमें न्यूज भी है, सब कुछ है, उसके साथ स्पोर्ट्स भी है. सो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज एनी इंडिविजुअल और एंटिटी इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग और डेवलपिंग और इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन स्पोर्ट्स. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो इन्वेस्ट कर रहा है या उसको प्रमोट कर रहा है, वो सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल्स है. सो एवरीवन इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. आई रिमेम्बर कि मैं 2010-11 में गया था, तो मैं एमिटी में एक कॉन्फ्रेंस में था. आई वाज स्पीकर देयर. सो वन ऑफ द पर्सन्स हु इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन इन द पी इंडस्ट्री, he later become vice chancellor of one of the universities. उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आपके जैसे लोग क्यों आ रहे हैं जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड नहीं है, ओनली स्पोर्ट्स वाले होने चाहिए, पी वाले होने चाहिए. लेकिन कोई भी इंडस्ट्री में, अगर हम हॉस्पिटल देख ले, अगर हम इंडस्ट्री देख ले, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं. उसमें सेल्स के भी लोग होते हैं, उससे HR के लोग होते हैं, उसमें मार्केटिंग के होते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए होते हैं. So similar thing is the sports industry, which is a very open industry. It's a small industry, but abhi it has expanded so much. I'll talk about the numbers. इसमें opportunities क्या है वो काम करने के लिए? So these are the areas listed. हम sports को अगर break करते हैं, so there are 4 things: sports, physical education, fitness and leisure. These are the 4 main segments in sub-sectors. हम sports को अगर break down करते हैं, sports के लिए जितना बड़ा है, physical education उतना ही बड़ा है, फिटनेस इतना ही बड़ा है, और लेजर है. अगर हम फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हमारे पास जो है वी हैव 30 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन. 30 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, और उसमें हमारे पास जो स्कूल्स है 15 लाख स्कूल्स है ऑल ओवर इंडिया में. आप सोचिए कि अगर एक PE टीचर भी रहता है हर स्कूल में, 30 करोड़ का, अगर हम आइडियली स्पीकिंग हमें 250 बच्चों में एक PE टीचर होना चाहिए. अगर हम उसको 300 भी ले लेते हैं, सो 300 मिलियन बच्चों के लिए हमारे पास 1 मिलियन PE टीचर होना चाहिए. 1 मिलियन मतलब 10 लाख PE टीचर होना चाहिए, अगर हमारा ऑल ओवर इंडिया में प्रॉपरली अगर फिजिकल एजुकेशन को रन होता है. सो दैट इज अ मैसिव साइज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ओनली फ्रॉम अ स्कूल सेगमेंट. सिमिलर हायर एजुकेशन हो गया या कॉर्पोरेट्स हो गए, तो उसमें अगर हम बाकी उसमें हम एक्सपैंड करते हैं, सो दैट नंबर इज प्रीटी लार्ज. सो टोटल नंबर ऑफ people required for sports as such, sports, PE, fitness and leisure is 34 lakh as per the report from FICCI or sector skill. इसमें मेन मैं 10 एरियाज को मैंने लिखा हूँ, वैसे तो 54-55 है. फर्स्ट थिंग इज स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट्स ए ह्यूज एरिया, एंड जिसमें अगर किसी ने फिजिकल एजुकेशनल स्पोर्ट्स किया हुआ है एंड दे हैव अ बैकग्राउंड इन स्पोर्ट्स साइंस, एनी सॉर्ट ऑफ साइंस, उसमें इंटरेस्ट भी है, यू कैन एक्चुअली गेट इनटू इट. डॉक्टर्स गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु हैव गॉट इनटू स्पोर्ट्स, बट इनिशियल लेवल पे भी अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन कोई कर रहा है, तो वो अभी जो NEP 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में देयर आर पॉइंट्स व्हिच आर बीइंग गिवन फॉर द कोर्सेज दैट यू डू एट अ school level or higher education level. Sports broadcasting in media, the entire broadcast industry is huge because उसी से ही पैसे बनते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ब्रॉडकास्टिंग से. So sports broadcasting में you have producers, you have editors, you have people who are involved in marketing, people in sales, people who do स्पॉन्सरशिप को मैनेज करते हैं, ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन. तो प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारे रोल्स हैं. द स्पोर्ट, बिकॉज कोई भी इवेंट पे जैसे स्टार टीवी से कोई भी जाएगा शूट करने के लिए, टिपिकली दैट इज आउटसोर्स टू ए प्रोडक्शन हाउस. प्रोडक्शन हाउस के अंदर फिर लोग होते हैं जिसमें कैमरामैन होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, उसमें
then you have commentators, so whole lot of people. Then there are sound engineers, there are editors, काफी लोग हैं. स्पोर्ट्स ग्रासरूट में हम जैसे फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोचिंग की बात कर रहे हैं, वो सारे स्पोर्ट्स ग्रासरूट का मेजर पार्ट उसमें या डेवलपमेंट इटसेल्फ. ग्रासरूट का डेवलपमेंट के लिए हमें मैनेजर्स चाहिए, हमें स्कूल्स के लिए काम कर रहे तो स्कूल के लिए जैसे हमारे लिए चाहिए होता, हमें कैसे रोल्स चाहिए होते हैं. हमें चाहिए people who are physical education teachers, people who then there are sports coaches, then there are people who do the auditing of what they're doing. So basically operations की managers चाहिए होते हैं, हमें marketing के लोग चाहिए, हमें school के relationships को manage करने के लिए लोग चाहिए, कोई quality check करने के लिए, कोई curriculum बनाने के लिए. So sports grassroots या physical education from an organized sector point of view a lot of roles. Sports facilities. So हम जाते हैं, हम स्टेडियम्स को भी कंपेयर करते हैं, देखो वो स्टेडियम कितना अच्छा है, कितना खराब है. जैसे भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है, वो जाओ तो लगता है कि कोई 5 स्टार होटल है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इवन इफ यू गो टू द वॉशरूम्स, इवन इफ यू गो टू द ट्रेनिंग एरियाज. So if you go look at sports facilities, whether it is within a stadium, within an academy, whether it is within a hotel, the sports facilities in different places have different context. So sports facility is very depends on where it is situated, क्या context है. So sports facility or facility managers or management के लिए there are a lot of roles which are there and very technical roles also there. Swimming pool का अगर मैं as an example ले लेता हूँ, उसके अंदर हमें बहुत सारे लोग चाहिए उस फैसिलिटी को मैनेज करने के लिए. और हॉर्स राइडिंग, एनी दैट वे. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज बेसिकली, अगर मैं खेलो इंडिया हो या कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स हो, कोई भी इवेंट हो, साउथ एशियन गेम्स हो, तो उसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का देयर इज अ ह्यूज रोल. और इवेंट मैनेजमेंट के लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का काफी रोल्स है उसमें. Sports development, again, I mean development or infrastructure, development of facilities, documenting them, certifying them. So there's a lot of things which will basically go as part of the sports development, or even planning for 5 years, 10 years, and executing all that will basically be part of that. Sports manufacturing and retailing. I mean, right now, if you look at the bat, look at the ball, look at all the equipment, it is not simple manufacturing. कि अगर मैं फुटबॉल ले लूँ या क्रिकेट का बैट, देयर इज अ लॉट ऑफ स्किल्स इन्वॉल्वड, देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वड, लॉट ऑफ प्रिसिशन इन्वॉल्वड, रिसर्च उसमें काफी चाहिए होता है बिकॉज इक्विपमेंट्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. सिमिलरली रिटेलिंग ऑफ दोज इक्विपमेंट्स, उसको कहाँ बेचना है, प्रोडक्शन तो कर दिया, उसको बेचेंगे कहाँ. सो ऑल ऑफ अस टॉक अबाउट डिकाथलॉन कि डिकाथलॉन कितना अच्छा है. अभी हमें पता नहीं कि जो रिबॉक है, रिबॉक इज इट ए शू कंपनी और इज इट ए स्पोर्ट्स apparel company. So there's a lot of blur between जो respective industries है उनके साथ तो sports के बीच में काफी ज्यादा blur है. तो हम PE और sports को cover करते हैं, then we'll get into other thing. Physical education में जो है physical education teacher, कोई PE teacher तो बन सकते हैं उसमें. और उसमें 2 रूट है, either BPED, BP, MPED, वो तो कर सकता है. और उसके साथ वो भी है सेक्टर स्किल काउंसिल का एक कोर्स है, NSQ लेवल 4 की सर्टिफिकेशन कोर्स है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का. सो दैट इज आल्सो कोर्स दैट स्टूडेंट्स कैन डू व्हेन दे आर इन स्कूल. एंड तो इसमें इफ यू आर डूइंग अ PE टीचर, स्पोर्ट्स साइंस डिग्री इज probably is a little less relevant क्योंकि the work that you are doing is like a nursery teacher. जो नर्सरी के टीचर होते हैं या प्री प्राइमरी के टीचर्स होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन इक्विवेलेंस. उनका रोल होता है बड़ा फाउंडेशनल रोल. PE टीचर का जो रोल है इज टू बिल्ड दैट फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट एथलीट्स जो है, ओलंपियंस है, उनको जो डिस्कवर किया वो PE टीचर्स ने डिस्कवर किया. कर्णम मल्लेश्वरी जो है, उनको उनके PE टीचर ने डिस्कवर किया. दूती चंद को अपने PE टीचर ने डिस्कवर किया. वी गिव ए लॉट ऑफ क्रेडिट टू स्पोर्ट्स कोच जो लेटर ईयर्स में आते हैं, but it is a PE teacher, physical education teacher who has a lot of relevance in school. कि हम बच्चे को ग्रूमिंग कैसे कराएं, गिव देम होलिस्टिक एजुकेशन, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, फिर उनका स्पोर्ट्स स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, एंड देन probably passed on to the sports coach who will probably do a high level
ट्रेनिंग द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एडू स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स सीड हो गया, द स्पोर्ट्स गुरुकुल हो गया, वो सारे फिजिकल एजुकेशन की कंपनीज हैं. स्पोर्ट्स कोचिंग अगर स्पेशलाइज की बात कर रहे हैं, so it could be in different levels. It could be sports coaching within the school. It could be community sports coaches. Huge requirement in terms of job roles. Or high performance coaching, yeah, elite performance coaching, yeah, depending on what qualifications you have, you can actually get into all of them. A sports authority of India में भी job हो सकता है. It could be in JSW, it could be Tata Trust, FC Goa. So इस तरीके से जो there are a lot of organizations who are into specialized coaching and वहाँ पे ये कर सकते हैं. मैं एक वीडियो देखता हूँ, प्ले अगर होता है. So asking which course is right for me. I think वो प्ले नहीं हो रहा है. Can you see? मुझे पता नहीं आपको वीडियो दिख पाया कि नहीं दिख पाया. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. We were able Visible. ओके ओके ग्रेट. तो ये so basically अगर हम देखते हैं तो यू लुक्ड एट वेरियस काइंड्स ऑफ रोल्स. इसमें हमने उसका ओवरलैप जो है हेल्थ सेक्टर के साथ भी है, उसका ओवरलैप फिटनेस के साथ है. हम एक्सरसाइज साइंस की बात करते हैं, हम उसमें रिकवरी की बात कर रहे हैं, इंजरी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं. We're looking at performance enhancement also as a from a role point of view. So from a courses and the roles point of view, there are a lot of things that are part of the from a career point of view. Let's look at sports and exercise science में हम क्या चीज कर सकते हैं. So we can actually take a look at. Is it playing?
So here, when we look at it, so basically here we are saying that how does sports and exercise science impact? One is athlete, second is anyone who is physically challenged, and third is even normal people. How do you stay fit? How if something happens to you, how do you how let's say how do you prevent diabetes from happening, or if it has happened, or what is it that you can do to actually combat that? So essentially, the sports and exercise science, it's not only those who do it, it's not only working with sports teams, but also you get to work with hospitals, you get to work with patients. So from a role point of view, it's actually cutting across various sectors. From sports, health, and fitness, all the three things would this thing, and simple lifestyle management also. So sports science and technology, let's get into that. Here we are looking at sports and exercise psychology. We're looking at diet, nutrition, looking at strength and conditioning experts, looking at biomechanics, also looking at research and data. One more thing which I missed out telling here is basically, so there are a lot of work happening in the area of building sensors in terms of building IoTs. So how is it that we can actually use sensors to detect anything from happening, whether it is sweat analysis, whether it is sleep analysis, even your basic lifestyle. If you can actually detect, you can capture the data, or when you are actually on a treadmill or when you are playing. So there's a lot of data that can get collected, and in terms of analytics, you can actually work on that. And artificial intelligence, we are talking about Chat GPT right now, but AI as such and machine learning can actually help in terms of prevention and also in terms of diagnosis if something happens. So sports science and technology, I mean, though these are some of the things which I mentioned out here, but when you expand science to technology part of it, that can also be applied to conduct the event, like timing, scoring, and result system. So that's part of a sport technology part of it. Things like a games management system, things like apparel management, things like athlete performance data that you can actually collect and analyze, or even statistics of biographical data. So there's this company called Introstrada, which is based out of Europe, that actually collects the data of biographical data of players, and that it sells it to all the event companies. So that's the reason. That is how all the commentators can say that Sachin Tendulkar, when he was age 8.5 years, he scored this thing. So they don't talk out of memory. There are actually systems which are there, like a commentator information system, a games information management system, or a mobile application for whether it is event or for players or even for training. So all of these are part of sports technology. I mean, in fact, there's a lot of work which is happening, whether it is on the web, whether it is on the whether it is mobile applications, television. So the Hawkeye effect, as an example, it revolutionized everything. Duckworth and Lewis method, application of that. Uh, so one area is on the sports sciences side of things, which I mentioned out here. The technology side of things is also very interesting part of it. And here, anyone can get involved. I met physical education and sports students who are getting into that because they have passion for writing, they have passion for building user interfaces, they have passion for revolutionizing how training can happen through technology. So there's a lot of things which are actually happening where you can collaborate with someone who is from a technology background. And frankly, for me, I was not from a PE background, but I collaborated with people like Dr. Kalpana Sharma, then Dr. Sandeep Tiwari, Dr. Sandhya Tiwari. They actually gave a lot of insight. Dr. Naruka, who was my colleague in Commonwealth Games. So they gave a lot of insight in terms of how PE is to be done, but along with them is how I could build. So sports science and technology is a huge area where it is not restricted only from athletes' point of view, but think about it from a sports club point of view, think about it from a conducting of events point of view, think about it from organizing information or disseminating information, even basically building an app like a Twitter or a notification. There's a lot of things which are all around. One is on the science side, the other one is on the technology side.
So this video I'm going to skip. This is a typical sports science or engineering lab. So where you actually learn from human anatomy to physiology to sensors in terms of timer gates. So it's actually a lab which is both sports science and engineering. I will share it with you. It's a little longer, so I'll probably share it as part of the presentation. Sports management. When we are looking at sports management, here, what are the typical roles? So typical roles are operations or running the event, product launches, social events, ticketing, marketing, exhibitions, HR, sponsorship, legal, finance. In Commonwealth Games, we had a team of 1,400 people working for Commonwealth Games organizing committee when I was part of that. And in my department, I had the second largest department. We had 140 people. And so there were totally 34 departments. Just imagine, logistics is a separate department, protocol is separate, accommodation is different, apparel is different, sponsorship is different, merchandise is different. So there are roughly around 32, 34 different kinds of departments which actually get involved for running of a large event, whether it is IPL or a CWG Olympics is a very large event. So apart from apart from the number of people that I talked about, 1,400 people, we had additional almost 70,000 volunteers were part of that. So volunteer training program is an example where there's a huge opportunity. If you're a good trainer, अगर आप PE teacher हो या sports coach हो, अगर आपके पास वो capability है that you can actually train people, very good communication, whether it is written or making PPTs or ability to speak, or ability to engage the audience. So I think it's a great thing to get into. Then there are legal technology. Let's look at the sports media companies. Here, when you're looking at sports media companies, there are companies like Star TV, Sony, Z, who have sports channel. Then you have news channels like NDTV, who have sports desk. Then you have newspapers having sports supplement. Radio stations also have sports commentator. Magazine, there are specific sports magazine like a Sports Star. Or you have sports websites right now, like a Cricket for a Sports Creator. So if you're good in terms of your writing skill, in terms of analytical skills, you know that. So I know that in my amongst my batchmen, so we have some WhatsApp groups. I know there are a couple of people who are very good in terms of analyzing cricket. They keep saying कि शुभम गिल को खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, केएल राहुल क्यों है टीम में. So they analyze and they're very good in terms of this thing. So even though they are engineers or whatever, so they could have also become good analysts. So if you think that you're a good analyst and you can write well or you can speak well or you can document, you can create statistics, so I think it's a great career to be in any of in the sports media. Similarly, if you're a good cameraman, if you're good at videography, if you're good at photography, that's also this thing. Or if you're interested in production, I think there's a lot of careers in sports media around production, editing, and all that. So here, this is an example of how basic knowledge about science can also be applied to sports. So this I'm picking some science and mathematics and just picking up some lessons. Like a class 11, if someone is good in, let's say that even if you got into PE and sports right now, you're doing the same, and if you're interested in science, here is an example where this is the Fosbury flop. Why is it that Dick Fosbury actually was the first one to jump backward? Why did he do it? Because there is this concept called center of mass. सेंटर मास जो है टिपिकली बॉडी के अंदर होता है, बट जैसे प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल में सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर होता है. या तो हम बॉडी को सामने बेंड करते हैं, पीछे बेंड करते हैं, तो वी फील कि वो थोड़ा हेवी हो जाता है. जब हम सामने की तरफ बेंड करते हैं, हमारा लगता है सर गिरने वाला है, क्योंकि सेंटर मास बॉडी से बाहर होता है. तो सिमिलरली हम बॉडी से बाहर है. सो हियर इन दिस केस बाय जंपिंग बैकवर्ड, उनका सेंटर ऑफ मास को जहां पे था वहीं रहेगा सेंटर ऑफ मास when you're jumping high, but he could raise the body by keeping the center of mass just around that high jump की पोल के ऊपर. So ये है. और इवन हम कहते हैं नीरज चोपड़ा ने जो अभी एग्जांपल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एंगल्स, पैराबोला, अगर हम ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे जैवलिन फेंकना है तो कितने एंगल में फेंको, because typically हम कहते हैं 45 degrees में फेंको so that you get the maximum distance with the maximum force, but it's not really 45 degrees, it has to be slightly lesser than that.
because you have to compensate for the height of the person so that it can reach a higher this thing. So yeah, so basically there is a lot of science which is involved. So or mathematics which is involved. If you're interested in mathematics, if you had interest in science, and right now you are in a sports, you're doing a sports course, you can apply all of that which you learned in your school टू स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट. जैसे हम कहते हैं इन स्विंग क्यों होता है, आउट स्विंग क्यों होता है, या बॉयंसी जो है, बॉयंट फोर्स और सेंटर ऑफ मास अलग अलग ये होता है, तो मैं स्विमिंग में कैसे उसको यूज कर सकता हूँ. मैग्नस इफेक्ट है. तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, या तो ट्रांसफर ऑफ वेट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से यूज हो सकता है. तो ये अगर मुझे पहले मैं पढ़ा हूँ, अभी मैं स्पोर्ट्स का ये कर रहा हूँ, तो एज ए स्पेशलाइजेशन probably I can do some of that, then I can build careers around that also. Simple example, Bernoulli's principle, कैसे aerodynamics में swing कैसे use कर सकता हूँ, या even my understanding of basic mathematics which I learned in school, क्या मैं statistics में use कर सकता हूँ, because it's always run rate होता है, net run rate होता है, everything is all a lot of numbers. If you are good in numbers, statistics, analytics, आजकल तो एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा काम है, डेटा एनालिटिक्स है, तो आपको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, बट इफ यू गुड इन एनालिटिक्स यू कैन एक्चुअली यूज द टूल्स टू एनालाइज, तो आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके आप उसको कर सकते हैं. लेट्स लुक एट स्पोर्ट्स फिटनेस का जो मार्केट है, ग्लोबल फिटनेस का मार्केट. यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल फिटनेस का मार्केट है ऑलमोस्ट $94 बिलियन का था 2018 में. 2024 में $150 बिलियन के आसपास प्रोजेक्टेड है. यूएस में 30 बिलियन है, चाइना इज 5 बिलियन, and India also is expanding rapidly. Almost 34% का growth है इंडिया में in terms of overall market, fitness का market. Worldwide 2.1 million, 2 million से ऊपर clubs है worldwide, और sale of equipment almost 5 billion के आसपास है. And जो wearable smart devices, आजकल smart watches आ गए हैं, उसके wearables आ गए हैं, बहुत timer gates आ गए हैं, chips आ गए हैं, तो all of that, that's also a huge market. अगर आप मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसमें भी वो चाहिए होता है. एंड स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिक्स जो है, दिस अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आई मीन ऑल ऑफ देम, वेदर इट इज फुटबॉल है 25 बिलियन का, ईपीएल 4 बिलियन का है. तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं उसमें, और एक 30 सेकंड का एड स्पॉट के लिए $2.25 मिलियन का पे करते हैं कंपनीज. तो यू कैन इमेजिन कि, और राइट नाउ आईपीएल इज अमंग्स द टॉप 1. हमारा जितने भी एथलीट्स हैं, विराट कोहली हो, जो भी है, इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स आर सो हाई. इवन ग्रासरूट प्रोग्राम के लिए अगर हम देखते हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम के लिए जब बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, और खेलो इंडिया स्कूल में, उनको भी ऑलमोस्ट 56,000 पर मंथ, ये उससे ज्यादा ही है. आई एम नॉट वेरी क्लियर, आई थिंक इट्स अबाउट 18 lakhs पर ईयर, सो रफली अराउंड 1.5 lakhs के करीब इन्वेस्टमेंट है बाय द गवर्नमेंट. So इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी है? So this is 1 million jobs are to be created, and actually 4.3 million है over a period of time. That's 43 lakh jobs के requirement इंडिया में. तो ये सारे हैं. 1.64 बिलियन डॉलर था to 2019 में इंडिया मार्केट, एंड वो ऑलमोस्ट 30% का ग्रोथ हो रहा है, 25 से 30% ग्रोथ हो रहा है ओवरऑल. अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया में? फिटनेस के फ्रेंचाइजीज हैं, न्यूट्रिशन में ट्रेनिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हर चीज के लिए ट्रेनिंग चाहिए. हम कुछ भी करना चाहिए, अगर हमें जिम के अच्छे ट्रेनर से, उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, अगर हम फिटनेस के लिए चाहिए, स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए चाहिए, सो ट्रेनिंग इज अ ह्यूज थिंग. जैसे हमने एलएनसीबी ट्रिवांड्रम से मिलकर 43,000 लोगों को ट्रेन किया था, अब तो वो 75,000 टीचर्स हो गए. प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो गए, अपरेल हो गया, एक्सेसरीज है, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, जिम्स, इवेंट्स एंड सर्विसेज हमने बात किया, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स के एप्स की बात किया हमने, एप्लीकेशन बनाओ कि लोगों को स्कूल्स में हो या इंडिविजुअल लोगों को घर पे बैठ के अगर फिटनेस की ट्रेनिंग करना है, जैसे हम काफी सारे, हम गो फॉर फिट की बात करें, गोकी की बात करें, हेल्दीफाई की बात करें, ये सारे एप्स का मार्केट बहुत बड़ा है. योगा, ऑनलाइन योगा क्लासेस, या फाइंडिंग की प्ले फील्ड्स कहाँ पे आसपास, तो बहुत काफी सारा डिमांड है उसमें. कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटाइजेशन एंड फिटनेस, बेसिकली ऑन ग्राउंड एंड ऑफ ग्राउंड को कॉम्बिनेशन में जैसे हम कर रहे हैं. स्किल ट्रेनर्स का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्टार्टअप्स विथ न्यू आइडियाज.
तो ये ब्रॉड लेवल में जो इंडिया में कुछ कुछ अभी अपॉर्चुनिटी है. सो व्हेन यू आर चूजिंग करियर इन स्पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू सिलेक्ट अ करियर पाथवे. स्पेसिफिक जॉब के बदले आप एक पाथवे चूज कीजिए, मुझे इस एरिया में काम करना ब्रॉडली. तो उसमें क्या होगा, करियर चॉइसेस भी चेंज हो सकता है, उसमें कोई लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं है. तो सो दैट यू कैन एक्चुअली ब्रॉडली लुक एट इवैल्यूएट योर करियर सेटिस्फेक्शन जो है क्रिटिकली आपको देखना है. आप अपना स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है फ्रॉम टाइम टू टाइम. स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. कि क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरा वीकनेस है, और कहाँ का एरिया में क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या क्या थ्रेट्स है, कहाँ पे मुझे दिक्कत आ सकती है. अगर ये चार चीज एनालाइज करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई थिंक इट विल बी वेरी इजी. जैसे एज एन एग्जांपल, मेरा स्पोर्ट्स में पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि आपको इंजीनियरिंग करना है या जो भी करना है, क्योंकि मार्क्स भी ठीक ठाक थे, तो बिट्स पिलाने में मैंने पढ़ाई की इंजीनियरिंग का. इंटरेस्ट तो था स्किल से, क्या मैं स्पोर्ट्स के साथ कर सकता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वहां रह के मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, पहले तो मुझे वो सोचना है क्या क्या अपॉर्चुनिटी है. तो मेरे सामने जैसे 2-3 अपॉर्चुनिटीज थे. एक तो क्या कि सोचा कि टेक्नोलॉजी में काम कर सकता हूँ, जिसमें मैं सोचा था फील्डर्स के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स बनाऊं. या दूसरा अपॉर्चुनिटी था जो मैं कॉमनवेल्थ में था, मैं इतने सारे लोगों से मिला जो स्पोर्ट्स कोचेज हैं, हर डिसिप्लिन की कोचेस थे, हर डिसिप्लिन की ऑर्गेनाइजर्स थे. और मुझे ये चाइना का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो भी मुझे दिखा कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जो स्कूल में 30 करोड़ बच्चे हैं, और 30 करोड़ बच्चों को किसी ना किसी तरह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पाए, एनीवे इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स. क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप उनके कोच नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको भी पता है कि आपने जो काम किया था कहीं ना कहीं पे उसका काम आया हुआ है. अगर 77 लाख फिटनेस असेसमेंट हुए हैं, उसमें से 150 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं खेलो इंडिया उसके लिए, आपको हो सकता है आपको कोई न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको पता है कि सेटिस्फेक्शन, आपने कुछ काम किया तो उसमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता ही है. जैसे आप लोग सारे, बहुत सारे लोग हैं जो करिकुलम में काम करेंगे. अगर आपका करिकुलम लेटेस्ट करिकुलम हो, तो वो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट. कि आपका करिकुलम हमेशा लेटेस्ट है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लेटेस्ट जो हो रहा है इनोवेशन अराउंड द वर्ल्ड. तो आपको ये देखना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, आप उसको कैसे यूज करना है. और वो थ्रेट भी देखना बहुत जरूरी है. आपके इंडिविजुअली आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आप उनसे कैसे बेटर हो सकते हो, या आपकी क्या वीकनेसेस है, वीकनेस के ऊपर फोकस ना करके स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना, ये बहुत जरूरी है. जनरल स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट है, दीज आर सम ऑफ द स्किल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. Computer literacy I think is very important, because right now you cannot say that you cannot have a assistant to make PPTs for you. You should have the ability to make presentations yourself. You should have the ability to create good presentations. People skills are important. Sports is people management. You have good relationship with people, seniors, juniors, आपके peers, सबके साथ excellent relation होना चाहिए. And you will also not be able to choose whom you want to work with. So a lot of times हम सोचते हैं यार वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो लेकिन वो ठीक है, बट हमें तो काम करना उसमें. जैसे सिलेक्टर्स टीम को सिलेक्ट करते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं, प्लेयर्स अपने आप थोड़ी चूज करते हैं कि टीम कौन है. Similarly, so people management is very important. Whether you are captain of a team or whether you are a team player, even within our organization, people management is very important. Flexibility, adaptability, extremely important. Record keeping skills. Ability to work with people of different groups, culture, lifestyles I talked about. Language skills are important. And the teachers who are good in communication are doing better than people who are not good in communication. So if you are from a PE background, it's very important that you, even if you think that your communication is not good right now or not up to mark, join a course. Or talking to everyone in English or in Hindi, but have a structured way of communicating also when required. Presentation बनाना आपको आना चाहिए. Presentation का आपको ideas को present कर पाना आना चाहिए. You should be able to create curriculum. You should be able to create rubrics. You have to make strategic presentations, the 5-year plan, 10-year plan, vision documents. तो ये सब आना बहुत जरूरी है when you are doing anything, whether it is in college or any context. Community relationship, because if you are implementing a problem, a program, you should have good linkages with the community. Code raising skills. काफी बार स्पोर्ट्स में क्या होता है कि पैसे नहीं
देते हैं, तो आपके पास कुछ एबिलिटी होना चाहिए कहीं से थोड़ा थोड़ा करके पैसे में कर पाऊँ इकट्ठा. You could be small amount, large amount, but you need to have certain skills in terms of fundraising. Budgeting and accounting skills, because a lot of this is basically very unstructured when you are holding anything. So important to have accounting skills. Selling, interviewing, global awareness, oral and written communication we talked about. Self-starter important है, and strong ethics. I always believe that you need to be ethical, you need to have integrity. बहुत जरूरी चीज है. Because बिना integrity or ethics का, it is, I mean, something that I actually always advise. In fact, I quit Commonwealth Games because of certain ethics and integrity issues. I believe that all of us have a responsibility to be very ethical, to have a career which is spotless and with integrity. आप जो भी काम करें, sports काफी बदनाम भी है for doing not the right things, but I would recommend everyone should have clear this thing. Just career in sports offers far more opportunities than this coaching or teaching. ये काफी मैं इसलिए वो presentation मैंने बाकी अलग चीज में ज्यादा focus कर रहा था. So it's very important that you, if it is a passion, work on something that you are passionate about within that sports industry. Hopefully, I want to end by saying that follow your passion. So that's very important. If you follow your passion, then automatically everything will fall in place. I hope I have been able to explain some of the things. So if you want to talk to me about anything, ask me anything, please. Hello? Hello? I can take Hello. questions if there are. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Myself, Mr. Pandurang Naik. I am working in Dempe College of Arts and Science, Miramar, Panji, Goa, sir. Sir, now you have given a fantastic presentation. So, what is the basic difference you find between physical education in India and in other countries? Like when we say USA or China, they are winning so many medals at Olympics. Why India is not able to do that, sir? Is there any some drawbacks in our physical education in the beginning? Please put some light on this, Just sir. a second, sir. 1 second. Hello. Hello. Yes, sir. So your question is, can you hear me now? Yes, I can hear you, sir. Okay. So your question is that what is the difference between India and why is it that we are not at par with the outside? Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes, absolutely right. Yes. Okay, so basically a couple of things. I mean, when we look at the quality of, so one is the quality of everything that we're doing, whether it is a content, whether it is a execution of the curriculum, or the teaching methodology or the application methodology. I mean, all of that is a little flawed, and the amount of time and importance that we are actually giving for physical education. See, actually, if you look at habit formation happens in schools, which basically means that the amount of time that we give for, say, if we want a child to be fit, to have an active lifestyle throughout his life. So, as an example, that we are going to have 30%, 1/3 of Indians are going to have diabetes by 2030. Okay. And almost 70% Indians do not monitor their physical activity, do not do physical activity, or 60%, 62% people do not monitor their diet, which basically means that as a society, we are not very prone to fitness and active lifestyle as an overall society. Second thing is that we do not focus, we focus only on academics of children. So moment that changes, where there is adequate importance given to fitness, active lifestyle, important sports in schools, and parents actually get involved,
then a lot of cultural changes will happen. So the Fit India movement is basically keeping that in mind, where it is about habit formation in schools, where and also to include children, parents, and grandparents in that entire process, where there is fitness assessment, everyone. So that is Yes. about a larger cultural change, which is very important, because unless that happens, then the whole thing about physical education, sports, nothing will improve. Second thing, very specifically about physical education, the curriculum which is being taught, whether it is in school or in physical education colleges, are not at par with what is being done outside. So in schools, there needs to be a curriculum which focuses on, let's say, fundamental movement skills for up to class 3, then Yes. transfer of skills from, let's say, class 4 to 8, class 9 to 12 about sports skills. So there has to be structured curriculum for physical education sports in schools. To do Yes. that, you need physical education teachers who are equipped to do that, right? Yes, sir. Yes. So Sir. in physical education colleges like yours or LNIP, LNCP, when they're creating physical education teachers, they need to give them the tools to actually teach children in a structured way. The moment those tools are given to physical education teacher, then a whole ecosystem will change. So the training of the PE teachers, the training of sports coaches has to be very exact in terms of. So similarly, knowledge about sports science, knowledge about एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, बट एप्लीकेशन ऑफ दैट खाली पढ़ाई करने से नहीं होगा, उसको हम ग्राउंड में कैसे यूज कर पाएंगे, डेटा एनालिटिक्स को कैसे कर पाएंगे, अगर हम सारी चीज को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हैं बच्चों का, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स अगर है, ऑल द फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर उनका इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स होता है एंड दे एक्चुअली स्पेंड 6 months इन एन इंडस्ट्री, so when they go out and work, everything else will change, and then a lot of things will be closer to what is happening internationally. So these are some of the points that I feel that it's an overall change, both at a long-term basis and also on a short-term basis. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Most welcome, sir. Any other question? Yogesh sir, are you there? Any question, anyone? I mean, I hope it was useful. I mean, for anyone, if anyone feels that I missed out on anything, we could discuss that, or No, sir. so shall we wind it up then? Thank you, sir. Yeah.